Well, it was Delhi versus Chennai, and Chennai has demolished Delhi. Delhi crumbled in front of the Yellow Army like building blocks. And of course, if we talk about Chennai, the way they played, और सबसे अच्छी और खास बात है चेन्नई की ये थी कि दी मैन एमएसडी के बल्ले से भी रन निकले, जो कि बहुत अच्छा थे देखने के. उनके उनके बल्ले से खैर रन निकल रहे हैं, लेकिन आई एम जॉइंड बाय वसीम जाफर, आई एम जॉइंड बाय मोहम्मद अजरुद्दीन. वेलकम टू द शो गाइस. दिस इज Thank you. Sky247.net presents Not Just Cricket. My name is Ridhima Pathak. All right, let's talk about the match, Wasim. Good to see Chennai, the way they played. And I have a बिल्कुल. question. अगर कॉन्वे ने सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, ठीक है, और अगर आप उनके टोटल नंबर ऑफ रन देखें तो वो विराट से ज्यादा है, रोहित से ज्यादा है. अगर वो ज्यादा मैचेस खेलते तो क्या चेन्नई की कहानी आज थोड़ी अलग होती. बिल्कुल बिल्कुल डेविन कॉनवे बहुत आउटस्टैंडिंग. एक तरह से जो हम लोग स्टार्ट में बात कर रहे थे कि जो फैफ डुप्लेसी को उन्होंने मिस किया है, फैफ डुप्लेसी वहां से चले गए, तो वो एक अच्छा रिप्लेसमेंट था डेविन कॉनवे. बट सरप्राइजिंग था कि पहले ही मैच के बाद में उनको ड्रॉप कर दिया. और जो चेन्नई बिल्कुल ऑपोजिट वे है जैसे चेन्नई ऑपरेट करती है. चेन्नई जनरली बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं करती है, नो मैटर व्हाट हैपेंस. तो वो देखने में थोड़ा सरप्राइजिंग था कि पहले ही मैच के बाद में डेविन कॉनवे को उन्होंने ड्रॉप कर दिया. बीच में वो फिर अपनी शादी के लिए चले भी गए थे, बट आई थिंक इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस हैड दे स्टक विद हिम. उससे ज्यादा एक्चुअली मुझे लगता है कि थिंग्स वुड हैव बीन इवन बेटर हैड एमएसडी लेड फॉर द फुल सीजन. क्योंकि आप देख रहे हो कि जब से एमएस लीड कर रहे हैं, चेन्नई इज लुकिंग अ टोटली डिफरेंट आउटफिट. तो वो फॉर्च्यून प्रोबेबली वुड हैव बीन डिफरेंट. यही टीम जब रविंद्र जडेजा कैप्टनशिप के अंडर खेल रही थी, तो दे वर टोटली डिफरेंट. क्योंकि इट्स नथिंग टू डू विद रविंद्र जडेजा, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं. बट एमएसडी फैक्टर जो होता है, येलो आर्मी इज लुकिंग टोटली डिफरेंट. तो मुझे लगता है कि वो डिसीजन कहीं ना कहीं एमएसडी वुड बी रिग्रेटिंग. या अदर सर, तो आज प्री मैच हमारा जो मिड शो बेसिकली होता है 6:45 PM पर, तब तो कहा भी था कि अगर टीम में एमएसडी है तो कोई और कप्तानी करेगा ही क्यों. नहीं, बिल्कुल. I mean, when you have such an experienced player, I mean, if he's captain, if he's playing in the team, that means he should lead the side. If he's in the team and somebody else is captaining, I think it is no good, because I think, as Wasim said, Jadeja had no experience of leading the side, and then he really faltered. I mean, he was missing so many, dropping so many catches, also not batting well, not bowling well. So, like, it makes a lot of difference. He's got a lot of experience. He's one person who's won so many titles for Chennai and for the Indian team. So, I think when you have that experienced person, why you should have somebody else? And then, as Wasim rightly said, that I'm sure he would be regretting that decision, or whoever has taken that decision to let Jadeja lead the Chennai team. That's right. But we talk about, of course, Conway. If you could just throw light on his footwork and his finishing touches, the way he played today. Of course, he put up a score of 87 of 49 with 7 fours, 5 sixes. His footwork and his finishing touches. एब्सोल्युटली. रिद्धिमा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है. अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे, इफ आई कैन टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट हिम, 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर आए. 100 फर्स्ट क्लास मैच का एक्सपीरियंस है. काफी सारे साल से T20 खेल रहे हैं. इफ यू लुक हियर, 49 बॉल में 87, जस्ट आउटस्टैंडिंग. 177 के स्ट्राइक रेट से. सो जो स्टार्ट की जो हम बात कर रहे थे, जो इवन हम प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे रिद्धिमा, कि आपके जो टॉप 4 अगर आपके मैक्सिमम ओवर्स खेलते हैं, और अगर आपका एक प्लेयर जाके 80 प्लस स्कोर बनाता है और दूसरा प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद शिवम दुबे, इन्होंने बल्क ऑफ द ओवर्स खेला और वो रन रेट 10 के नीचे आने ही नहीं दिया आफ्टर द 7-8 ओवर्स. शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया, बट उसके बाद में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि चेन्नई अंडर प्रेशर. ऑलवेज उनका जो रन रेट है वो अबव 10 था, एंड दैट कैरीड ऑन थ्रू टिल द इनिंग्स एंडेड. सो दैट गोज ऑन टू शो देयर डोमिनेंस. विकेट्स हाथ में रखते हैं आपके, जो मेन प्लेयर्स है, जो टॉप 4 अगर आपके सारे ओवर्स खेलते हैं, तो इट कैन मेक सच अ ह्यूज डिफरेंस. तो डेविन कॉनवे को ऑब्वियसली सच एन आउटस्टैंडिंग नॉक. ही इज ओनली प्लेइंग हिज 4th inning and consecutive 50 plus scores. So it has been tremendous. The way Chennai has turned it around in the last few games has been magnificent. Yeah. As I said, the way exactly what Wasim mentioned,
The fact that his touches look like touches of an artist, his finishing touches. Yes, I think because he's played so many games, I mean like one जो फर्स्ट क्लास मैचेस जो खेलते हैं उसका एक अलग ही वो होता है क्योंकि अगर आप इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं उसके बाद आप फिर टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं वनडे भी खेल रहे हैं इतना अच्छा एवरेज है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होता है बट लेकिन देखिए उन्होंने उनका जो बेस्ट थिंग है कि उन्होंने हर बार क्या ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलने की कोशिश की है क्योंकि जब आप देखिए विकेट पे ठहरते हैं तो 87 के ऊपर रन होता है अगर आप विकेट पे एक 2-3 ओवर के लिए ठहरेंगे तो 80 रन आप बना ही नहीं सकते क्योंकि ये खासियत यही है कि उन कॉर्नर की वो लोग जब एक बार सेट होता है जब उनको स्टार्ट मिलता है तो उसको पूरा कैपिटलाइज करते हैं तो आई थिंक इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर आउटस्टैंडिंग इनिंग्स आई थिंक टुडे he really batted very well I mean I'm sure if Chennai maybe an outside chance if they qualify I think only because of Conway's batting as well बिल्कुल जी yes, yes. और रिद्धिमा कि जिस तरह से उन्होंने अटैक भी किया आई मीन आप देखें कि नॉर्किया के पहले ही ओवर में 15 रन लिए अक्षर को पहले ही ओवर में 2 सिक्सेस मारे कॉन्वे ने और उसके अलावा कुलदीप के ऊपर भी अटैक किया तो जो उनके जो मेन बॉलर्स थे रिद्धिमा तो उनको अंडर प्रेशर डाला है जो हम जी बात करते हैं कुलदीप को आप देखिए 11 बॉल के अंदर 37 रन तो उनको उनकी वो लय पकड़ने ही नहीं दिया एंड दैट शोज द बैट्समैनशिप कि वो प्रिपेयर्ड थे कि भैया कि जो उनके मेन बॉलर्स है उनको अंडर प्रेशर डालना है नॉर्किया को ऋतुराज ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया तो दैट गोज ऑन टू शो कि कुछ पर्पस के साथ में वो खेल रहे थे और जो कुलदीप यादव का जो फैक्टर था जो फियर फैक्टर वो बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे कुड पोस्ट सच अ बिग टोटल सो बहुत ही क्लासी इनिंग्स फ्रॉम बोथ ऋतुराज एंड डेविन कॉनवे yeah, a classy knock. और ऋतुराज was like Robin to Batman Conway. उन्होंने 41 of 33 posts किया, 4 चौके मारे, एक छक्का. ऋतुराज and his presence on the field today to give that massive score to Chennai. As a sir. well I think he's been very consistent because in the first couple of 3-4 matches he really Yeah, didn't he do well but wasn't in his element. Yeah, after that innings of 99, I think his confidence level, I mean, totally changed, and then he's a different player, like the way he played in the last league games. I mean, the last time the league was held. So I think it's basically about confidence. If you start getting runs consistently, then your confidence level is high, and then you play with positive intent. That's why you see in the first ball he came down and hit the first ball for a six. It shows that I mean he has a lot of ability, but with the ability he's backing himself, and also he's got confidence from the scores we had. Because see that's why when I say consistency, like even after 90s, he scored 30s and 40s, because then at least some runs are scoring. But there are some time, when you score 100 or 90, then there's a big slump in the next 3 or 4 matches. So that is not consistency. So it's been very consistent. I think these both players, put on a very big partnership. I think, I mean, 100 run, more than 100 run partnership, opening partnership in a T20 game within no time. I mean, it will help the batsman who came the low down the order, I mean, to play free and to free their arms and go for it. जी बिल्कुल. और सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं, अगर आप गेंदबाजी की बात करें चेन्नई की तरफ से, तो वो भी बहुत इम्प्रेसिव था, चाहे वो महेंद्र के Definitely. महीश हो या फिर मोइन अली. ना मोइन अली Wasim on any day he hardly gives away anything, but today what amazing control. बिल्कुल बिल्कुल उनके एक्चुअली वो जो स्पेल था पहले 2 या 3 ओवर में बिल्कुल आई थिंक ही ब्रोक द बैक ऑफ दिल्ली कैपिटल्स थे वो जिस तरह से उन्होंने 4 ओवर में 13 रन 3 विकेट 16 डॉट बॉल्स दैट इज अ लॉट मोर देन 2.5 ओवर्स ऑफ डॉट बॉल और वो जो 3 विकेट उन्होंने चटकाए मिचेल मार्श के ऋषभ पंत के आई थिंक दैट कंप्लीटली शट द गेम तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मिचेल मार्श जिस फॉर्म में दिख रहे थे जिस तरह से ऋषभ पंत दिख रहे थे फॉर्म में तो वहां पर आकर जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की इवन लास्ट गेम में भी आई थॉट ही बोल्ड रियली रियली वेल तो जब से वो वापस आए हैं चेन्नई इज लुकिंग अ डिफरेंट साइड और ये जो आज का जो स्पेल था वो बहुत क्रूशल था उसी की वजह से इतनी बड़ी जीत उनको मिली है आई फील बॉलिंग डिपार्टमेंट में ही इज बीन आउटस्टैंडिंग जी मैं एक अगर चीज एक बोलना चाहूंगा कि मुकेश ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल विकेट ली वो रोहन पॉवल की अगर आप देखेंगे तो भी बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि
अगर आप उनकी bowling देखेंगे over a period of so many games, it's been very very consistent. So I think, I mean, lot of credit should go to him also. जी 3 ओवर में 22 रन, 2 विकेट चटकाए, 7.33 की इकोनॉमी। ना सिर्फ मुकेश ने बट साथ ही साथ सिमरनजीत ने भी वसीम, बिकॉज अगर सिमरनजीत की फिगर की बात करें तो 27 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में और 6.75 की इकोनॉमी। नॉट जस्ट दैट, ही वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट गुड बाउंस टू द विकेट टुडे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पेस भी एक्चुअली 140 प्लस पे आपको पेस भी दिख रही थी। ही समबडी, वो ऐसे लगता है कि थोड़े स्टेडी कस्टमर है। जिस तरह से उन्होंने केएस भरत को आउट किया, 4 overs 27 for 2, somebody who's playing first time in the IPL, you'll always take it। जिस तरह से वो भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं, ये विनिंग कॉम्बिनेशन का पार्ट उनका भी है। तो जिस तरह से केएस भरत को आई थिंक उन्होंने सरप्राइज किया वो पेस और बाउंस से, तो बहुत बढ़िया। आपको नए बॉल से विकेट निकालने, क्योंकि दीपक चाहर नहीं है आपके पास में, एंड यू आर मिसिंग दैट फिगर। तो वो जिस तरह से मुकेश चौधरी और सिमरजीत सिंह जिस तरह से उभर के आ रहे हैं, and that is a good sign, for the Indian youngsters. I think he bowled very aggressively also, aggressively and flat out. So I think I was going to Madanlal Cricket Academy in Delhi. So in one of the practice nets, I faced him. So at that time, he was quick. I thought, he was going to play big cricket. So I think he really did well. He bowled very aggressively, and then that's what you want from a fast bowler. But as I said, were they playing on a different wicket today? Because it seemed like they were playing on a totally different track, the Chennai bowlers. No, I think the wicket was actually good. There's nothing wrong with the wicket if the other side is scoring 200 and more than 200 runs. So I mean, we really cannot blame the wicket, because I think even the batting has been very inept by the Delhi team, because they lost wickets at regular interval, and I think, I mean, it was in total disarray. If you see, they kept losing wickets after that. They never, settled down in the batting order. I mean, like, especially with Robin Power also, when he got out, I think everything went, I mean, like, quiet from then on. That's true. लेकिन I just have to make a point here कि आज दिल्ली को बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन let me tell you about of course we were talking about the roadblocks in their path। और जब आपको एक कोविड स्केयर मिलता है और आपके सारे प्लेयर्स जो है वो टेस्ट पे टेस्ट लिए जाते हैं और फिर आप अपने अपने रूम्स में कन्फाइंड है बिकॉज ऑफ बायो बबल, ऑफ कोर्स द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस विल शो ऑन योर गेम वसीम। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको एक तो आप ये जो कोविड स्केयर भी है, तो आपको पता नहीं है कि किसने कैच किया है वो डिसीज। आप रूम में जाते हो, अनश्योर हो, तो क्रिकेट के बारे में आप बहुत कम सोचते हो। यू आर जस्ट वरीड कि आपके टेस्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है। बट आई थिंक दे कोप्ड इट रियली वेल। जब लास्ट टाइम ये चीज हुई थी, तो जब मिचेल मार्श और दूसरे जो प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल से एक आधा सपोर्ट स्टाफ का भी कोई था, when they caught the virus, they came out and beat Punjab so handsomely. So I thought, जो भी उनके रोड ब्लॉक्स आ रहे, they managing it well. But आज के थोड़े परफॉर्मेंस से डेफिनेटली मुझे लगता है कि they'll be upset कि इतनी बड़ी हार उनको मिली है। Now they've come to a stage where they need to win the next 3 games out of 3, otherwise they are also out of the tournament। तो डेफिनेटली जब आपके ये कैंप के अंदर इस तरह की चीजें होती है, यू आर डूइंग टेस्ट, यू आर गोइंग इनटू योर रूम, यू आर सेक्लूडेड, तो इट्स नॉट द हैप्पी प्लेस विदाउट। That's right. Well, Delhi's run of not winning back-to-back matches continues. लेकिन इसी के साथ एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे। This is our numbers tracker powered by Sky247.net। ओके, आज जरा देखे कौन कहाँ आके रुका है। पॉइंट्स टेबल में लखनऊ सबसे ऊपर 16 पॉइंट्स के साथ, फॉलोड बाय गुजरात 16 पॉइंट्स, राजस्थान 14 पॉइंट्स, बैंगलोर 14 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप उनका रन रेट देखें तो थोड़ा डगमगाए हुए हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखें बैंगलोर, दिल्ली और हैदराबाद, यहाँ पे जो है यही एक युद्ध है चौथे पोजीशन के लिए। वसीम? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली पंजाब भी उस रेस में है। पंजाब भी if they win next 3 games out of 3, they are also in the qualification race, so you can't rule them out। तो पंजाब, सनराइजर्स, उसके अलावा दिल्ली, they all are in the hunt। but definitely जो ऊपर की जो 4 टीमें हैं, आई थिंक बैंगलोर को 2 में से 1 जीतना है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने आज किया है,
So they'll be, they look like a side to beat. और ऊपर की जो 3 टीमें हैं ऑलरेडी, गुजरात टाइटंस की आप बात करें या लखनऊ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, तो वो तो जिस तरह से खेल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो 3 तो चले जाएंगे। और अगर बैंगलोर अगला मैच जीत गया तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये रेस थोड़ी सी गर्म होने वाली। तो अगले 2-3 दिनों में जो मैचेस हमको देखने मिलेंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू डिसाइड के व्हाट इज गोइंग टू हैपन। That's right. और आज जीत गए बैंगलोर हैदराबाद के अगेंस्ट। लेकिन एक let's take a look at our top run scorers and our leading wicket takers. वैसे good to see कि चेन्नई का नेट रन रेट फाइनली पॉजिटिव में है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट रन देखिए हम इंडियन T20 लीग में, जॉस बटलर on top of that table with a strike rate of 152.21, 618 runs in 11 innings. KL Rahul followed by Faf du Plessis. KL Rahul puts up 451 runs in 11 innings. And let's take a look at most wickets. Of course, after what Hazaranga did today with that 5-wicket haul, he has come inches closer to UV Chahal, who has 22 wickets in 11 innings with an economy of 7.25. Hazaranga with 21 now in 12 innings, 7.85. Let's touch upon Hazaranga and the way he played today, Wasim. जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बॉलिंग की। और उनकी हम सबको पता है कि मेजॉरिटी जो उनके डिलीवरीज रिद्धिमा गूगली होती है, बट समहाउ द बैटर्स कांट पिक हिम। और उससे इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। तो अगर आपने मिस कर दिया या आपने उनको रेड नहीं किया तो इज इन द गेम, इट्स आइदर हिटिंग द स्टंप और इट्स आइदर you are going to get an LBW decision. But fantastic, I think, really good spell to watch. 18 for 5 with 14 dot balls. I think he just completely, एक तरह से बिल्कुल ही वॉश आउट कर दिया जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग की है। तो ही इज बीन मैग्निफिसेंट। एसआरएच के जो थोड़े बहुत होप्स थे, थोड़ा सा उनको डेंट कर दिया। एंड आई थिंक ही विल बी हैप्पी मैन। वन ऑफ द 5-wicket haul अगर हम देखें तो his name features there. So I think he's had a fantastic day. Yes, fifth best there, of course, in that table. But having said that, आज अगर हम देखें तो catches win matches वाला जो हिसाब है, देखिए बैंगलोर जीती बिकॉज वहां पे 2 कैच ड्रॉप किया हैदराबाद में, चाहे वो फाफ डू प्लेसी हो या फिर दिनेश कार्तिक। और यहाँ पे जो शिवम दुबे का कैच ड्रॉप हुआ है बाय पटेल, so that was another turning point. Of course, had they taken that catch, would the story be a little different also? No, definitely. I mean, if you take catches, if you allow good batsmen, give them a chance, they will not leave it. Like how if you allow good bowlers also to dominate, then they will definitely take a wicket. So it goes the same way. But I think in this league, I think we have dropped. There have been so many drop catches. I think maybe I mean the sixes scored. They should have a this thing also, a table for having those drop catches. Also, everybody, some catches have been very very easy and sitters. They have dropped. So I think they need to, I mean, most of the teams, I think they need to go back and practice more of fielding, because in the lights, it's not very easy to judge the ball, because, I mean, you feel that you've already judged the ball and you're right under the ball, but still the ball is in front, I mean, like, so you need to really, go all out in their fielding aspect, because most of the teams have dropped easy catches. So once you drop catches, you don't expect, I mean, good players to, I mean, leave that opportunity. So that's what, I mean, today it happened with Shivam Dubey also, and then Hyderabad team also dropped couple of catches. Very, very important, crucial catches, I think, which cost them the game. Yeah. Well, with that, moving on from dropped catches to dropping truth bombs, which happens on social media. Ladies and gentlemen, this is our social tracker powered by Sky247.net. कॉनवे के ऊपर ट्वीट आया है, आइए देखते हैं कि क्या ट्वीट है। ऑलराइट, वी गॉट Cricket Akash tweeting there's something about left-handed overseas batters in CSK's jersey. Hayden, Hussey, and now Conway. That's a very interesting point, Wasim. बिल्कुल बिल्कुल। और उनके ये हमेशा से ट्रेडिशन रहे हैं। इफ यू सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, पहले हिडन थे, उसके बाद हसी आए, इवन फाफ वाज देयर, इवन दो ही वाज नॉट लेफ्ट हैंडर, बट एक ओवरसीज ओपनिंग बैट्समैन हैज बीन द ट्रेंड with CSK. So somewhere you would say that CSK missed the trick by not playing him consistently. Had he been playing consistently, you never know that factor would have made a little bit of difference. But Conway has been outstanding. So many games. He's played only 4 or 5,
but he's definitely had a major impact on this turnaround. Yeah, and those tweets, of course, by Akash Chopra. जब आकाशवाणी tweet करते हैं तो of course उनकी वाणी जो है दाद देने लायक है. We've got Crick Tracker tweeting. All right, that one's for of course Moin Ali. All right, so that's Crick Tracker, the man on fire in that yellow jersey, and the man was on fire today. And then let's move on to the next one. We've got a tweet on RCB by Crick Tracker. Won only 3 matches in green jersey so far in the IPL history. Yeah, You don't want to say it too soon, Ridhima. yeah, we don't want to say this too soon, especially with Bangalore fans. They're very sensitive people, so we don't want to say this very soon. No offense here. Fingers crossed for you guys. I'm really rooting for, of course, Bangaloreans because I really want you guys to win. I mean, you've been robbed out of victory because sometimes of COVID, sometimes of your own performance, and a lot of other things. I hope this time you make it. Next week, let's take a look at it. This is by Wasim's good friend, and this is what Michael Vaughan has to say. DK has to be in the Indian T20 World Cup team. That's it. Full stop. What do you have to say? I think Wasim will agree with that. No, I think very few times his prediction makes sense, or so I do feel DK, the way he's been batting, he's been knocking on the door, and you do need to consider him. That spot of number 5 and 6, and for the finisher, DK has been doing fantastically for a long time now. In this tournament, he's himself, I think, has probably made 5 or 6 times. He's been consistently scoring and coming and doing the job. So I think he's doing his bits. I think the selectors need to take notice. That's right. Well, I would say that he's not knocking on the door. He's knocked the door open. I mean, how can you not see it? All right. With that, ladies and gentlemen, shifting gears, that was the end of our double header. Double धमाका था आज हमारा संडे को. कल है मैच मुंबई और कोलकाता का. अगर फिर प्रेडिक्शंस तो हम कल लेंगे ही, और कल ऑफ कोर्स हमारा शो भी होगा 6:30 बजे. लेकिन हाँ, मुझे तो मैच इतना ज्यादा रेलेवेंट लगता है मैच, क्योंकि बिकॉज बोथ साइड्स आर ऑलमोस्ट लाइक ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग आउट. जी, रेलेवेंस But तो still, I खैर think it's going to be a good game, because I mean T20 is always an interesting game. I'm sure Mumbai would definitely want to redeem themselves, and then in KKR want to prove that they've been losing so many games on the trot, so maybe they would want to win this game, and both of them would be trying to redeem themselves. that's what हमारे शो का नाम है. It's not just cricket. There's more to that particular match. What do you say, That's Wasim? exactly what I'm saying. Yeah. Wasim? Yes, tomorrow's match. बिल्कुल. I think मैच तो irrelevant है क्योंकि टूर्नामेंट के हिसाब से, बट एक प्राइड के लिए तो खेलना होगा. मुंबई इंडियंस, such a big team, such a big franchise. KKR has been in totally doldrums के वो जिस तरह से वो सिलेक्शन हो रहा है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो they want to redeem themselves. आप टूर्नामेंट में जाते हो तो you don't want to finish at the bottom of the table. So that will be the fight. Mumbai has got a little bit of momentum, so they look a little bit stronger side, I feel. ये दोनों टीम के बीच में अगर आप बात करो, और इवन जो डगआउट की भी जो सिचुएशन है या टीम की सिचुएशन है, आई फील Mumbai Indians look a little bit stronger side compared to KKR. KKR has to play out of their skins, क्योंकि जिस तरह से वो लास्ट मैच हारे हैं, टीम जितने चेंजेस हुए हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, they are totally looking out of sorts मेरे हिसाब से. All right, Kolkata still has an outside chance of making it. Kal ka match, of course, is going to be interesting. Please do tune in for our pre-show at around 6:30 p.m. This is Sky247.net presents Not Just Cricket. Thank you so much, gentlemen. Thanks a lot for joining in. And all of you have a great night ahead while you enjoy some cricket. Thank you. Awesome. Close. Thank you. Close.